हाय। द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? बोकारो में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? बोकारो में। याद करो, मोहन कुमार कौन है? मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त जो है कहाँ रहता है? बोकारो में रहता है, इसीलिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वो बोकारो में है। Restrictions on the transfer of SC, ST, OBCs lands is provided under which section of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। सो देखो, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था 1908 में, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग SC, ST, OBC का जो ज़मीन है ना वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि SC, ST, OBC के कम्युनिटी में एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, और साथ ही साथ मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं है, यूनाइटेड भी नहीं है, भोले वाले हैं। तो इनको उल्लू बना करके गुंडे लोग क्या करते हैं ना, इनका ज़मीन में हड़प लेते हैं, तो इसीलिए अंगूठा लगवा देते थे। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए मतलब रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र, मतलब SC, ST, OBC का जो लैंड्स है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है सेक्शन कौन सा, ये CNT एक्ट 1908 के कौन से सेक्शन में? सेक्शन 46। सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ SC, ST, OBC लैंड्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ CNT एक्ट 1908? सेक्शन 46। द टाइम bar for ejectment under section 46 is 12 years, that is after expiry of the said period the transferee will perfect his title over transfer land by adverse possession. So क्या बोल रहा है? The time bar for ejection under section 46 is 12 years, that is after expiry of the said period the transferee will perfect his title over transfer land by adverse possession। मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए ना कि हाँ ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो कितने साल तक? 12 साल तक, और उसके बाद फिर एक्सपायरी हो जाएगा, उसके बाद कर सकते हैं। सो द टाइम बार फॉर इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46 इज 12 years, दैट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड द ट्रांसफरी विल perfect his title over transfer land by adverse possession. Section 71A of the CNT Act 1908, which provides power to restore the possession of the members of the scheduled tribe over land unlawfully transferred, has been inserted by which law? देखो, सेक्शन 71A ऑफ द CNT एक्ट 1908 ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है पावर किसको? टू रीस्टोर द पोसेशन टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये क्या करता है? ये पावर प्रोवाइड करता है रीस्टोर पोसेशन को रीस्टोर करने के लिए। किसके लिए? टू फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ओवर लैंड अनलॉफुली ट्रांसफर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड बाय विच लॉ? ओवर लैंड अनलॉफुली ट्रांसफर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड बाय विच लॉ? तो इसको कानून बना करके कौन सा सेक्शन, ये एक सेक्शन घुसाया गया? बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969। बिहार शेड्यूल्ड एरियाज रेगुलेशन, बिहार शेड्यूल्ड एरियाज रेगुलेशन 1969। Section 71A of the Indian Act 1908, which provides power to the restoration to restore possession to to members of the state tribe over land unlawfully transferred, has been inserted by which law? Bihar Scheduled Areas Regulation 1969। Bihar Scheduled Areas Regulation 1969। Bihar Scheduled Areas Regulation 1969। The first Jharkhand woman to scale Mount Everest is Premlata Agrawal. Mohan Kumar Mangalam Stadium is located at Bokaro. Restrictions on the transfer of SC, ST, OBC lands is provided under which section of CNT Act 1908? Section 46. The time bar for ejectment under section 46 is 12 years, that is after expiry of the said period. The transferee will perfect his title over transfer land by adverse possession. Section 71A of the CNT Act 1908, which provides power to the restore possession to the members of the scheduled tribe over land unlawfully transferred, has been inserted by which law? Bihar Scheduled Areas Regulation 1969। Bihar Scheduled Areas Regulation 1969। Bihar Scheduled Areas Recognition 1969। Section 71A of the CNT Act 1908, which provides power to restore the possession to members of the state tribe over
over land unlawfully transferred has been inserted by which law? Bihar State Areas Recognition, Bihar Scheduled Areas Recognition 1969. Under Chota Nagpur Tenancy Act, CNT Act 1908, a female of the Khunt Katidar, खुंट खतीदार की एक फीमेल का नाम बताइए, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस राइट्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द inheritance rights on ancestral properties. The term Bhuinhari tenure is defeated in the Chota Nagpur Act 1869 includes Bhet Kheta. The term Bhuinhari tenure is defined. The term Bhuinhari tenure is defined in the Chota Nagpur Tenancy Act 1869, and Chota Nagpur Tenant Act 1869 includes Bhet Kheta. Chota Nagpur Tenancy Act 1908, a female of a Khunt Kattidar is excluded from the interference rights on ancestral properties. Under Chota Nagpur Tenancy Act 1908, a female of a Khunt Kattidar is excluded from the inheritance rights on ancestral properties. Under Chota Nagpur Tenancy Act 1908, a female of Khunt Kattidar is excluded from the interference rights on ancestral properties. The term Bhuinhari tenure is defined in the Chota Nagpur Tenure Act 1869, includes Bhet Kheta. The term Bhuinhari tenure is defined in the Chota Nagpur Tenure Act 1869, includes Bhet Kheta. Under Santhal Pargana Tenancy Act, SPT Act 1949, Khas village means a village that is in which there is no Mool Raiyat, no headman. So under SPT Act 1949, Khas village means a village in which there is no Mool Raiyat and no headman. Khas village means a village in which there is no Mool Raiyat, no headman. Khas village means a village in which there is no Mool Raiyat, no headman. Under SPT Act 1949, the village man's office is non-transferable. So SPT Act 1949 के अकॉर्डिंग जो विलेज हेडमैन है ना, उसका जो ऑफिस है वो नॉन ट्रांसफरेबल है. अंडर विच सेक्शन ऑफ द SPT Act 1949, a land that is not recorded as such small be recognized as treated or malnutrited और मूल रैयत जोट. So मूल रैयत का जोट और मूल रैयत जोट office holdings. So under which section of SPT Act 1949 a land that is not recorded as such shall be recognized or treated as मूल रैयत का जोत, that is private holding, or multi रैयत जोट, that is office holding. Section 10. Under SPT Act 1949, the village headman's office is non-transferable. In which section of SPT Act 1949 a land that is not recovered as such shall be recognized as treated as मूल रैयत के जोटे, प्रिमिटिव आइडियोलॉजी, और मल्टी रैयत जोत, दैट इज ऑफिस होल्डिंग. सेक्शन 10. चलो रिकैप करेंगे. द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज प्रेमलता अग्रवाल. मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट बोकारो. Restrictions on the transfer of ST, SC, OBC lands is provided under which section of CNT Act 1908? Section 46. The term bar for ejectment under the section 46 is 12 years. That is, after expiry of the said period, the transferee will pass his title over transfer land by adverse possession. ठीक है, चलिए फिर से रिकैप मारते हैं. द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज प्रेमलता अग्रवाल. मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट बोकारो. Restrictions on the
transfers of SC, ST, OBC lands is provided under which section of CNT 1908? Section 46. The time bar for ejectment under 46 is 12 years. The time bar for ejectment under section the time bar for the ejectment under 46 is 12 years. This is after expiring of the said period. The transferee will perfect his little time over transfer and land by adverse possession. Section 71A of the CNT Act 1908, which provides power to restore possession to members of the ST tribe over land unlawfully transferred, has been inserted by which law? Bihar Scheduled Areas Regulation 1969. Bihar Scheduled Areas Regulation, BSAR. Bihar Scheduled Areas Regulation. Section 71A of the CNT Act 1908, which provides power to restore possession to members of the ST tribe over land unlawfully transferred, has been created by which law? Bihar Socialist Religious Organization. Bihar Socialist Religious Organization. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.